Jayannath, friends, this was the Panda. Welcome to Master English. गतकाली आम ओडिया पढ़ी आम ओडिया आज पढ़ा इंग्लीश चैप्टर चैप्टर हूँ मनी मेंटेनेंस एक्जाक्टली पढ़ा नहीं बे ये पढ़ी सारी आम अलरेडी आज कौन करवा तार सब प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर गोटे भी प्रश्न छाड़ा नहीं ता सहित प्रोबेबल पैसेज एंड आउ गोटे जिन रहा तार जो थिंक इट आउट प्रत्येक प्रश्न आलोचना करवा शुद्ध ओडिया रे सुंदर भाव रे ओके आउ पिले बहुत दिन है परीक्षा करना नहीं गत रविवार दिन परीक्षा करी कही पारानी बाहर को पलैली काली थिंक सो काली तुमको 1 आवर बिफोर माने पूर्व तुमको इनफॉरमेशन दे दिया जीवो जदी हबो परीक्षा और काली हबार 99.99% चांसेस होची परीक्षा से जहा भी हो तो मनी मेडनेस चैप्टर होची मनी मेडनेस रो जहा भी प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर सब आलोचना करबा okay the money is our madness our vast collective madness and of course if the multitude is mad the individual carries his own grain of insanity ये जो लाइन रहिला एठी गोटे क्वेश्चन आसला प्रथम क्वेश्चन व्हाट इज आवर मैडनेस याकू हमें बही हिसाब रे लिखबा मु कहनी मोर मन रो लिखबा बही हिसाब रे जदी हमें लिखबा केमते लिखि परबा व्हाट इज आवर मैडनेस सिंपल मनी इज आवर मैडनेस आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस आंसर कौन मनी इज आवर मैडनेस आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस एतिकी लिखले हम दुई बार पाइबा व्हाट इज आवर मैडनेस जगह रे हमें जदी लिखबा मनी इज आवर मैडनेस आवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस हमें 2 मार्क पाउछ प्रलिप्त यस बेटा हां वो सिंपल जिंस माने इजी करिवा पई चाहू छी इंग्लिश टाको 2 नंबर प्रश्न होची व्हाट डज द पोएट डाउट एटी जो रहिला यू नो कोन अछि आई डाउट इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट ए पाउंड नोट विदाउट एनी फैन ये जो क्वेश्चन रहिला एटी कहला व्हाट डज द पोएट डाउट ए क्वेश्चन आंसर कौन हम व्हाट डज द पोएट डाउट ए जगह रे हम कहि परबा द पोएट डाउट्स सिंपल ए पोएट डाउट्स इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट ए पाउंड नोट विदाउट ए पेन लुक एट दिस बही भितर थिबा प्रश्न मोर एग्जाम चालू छी सेति पई क्लास करि पार नथली नो प्रॉब्लम बेटा कल्याणी नो प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम नहीं बेटा तो हमरो ए क्वेश्चन आंसर केमते होबो पिले सिंपल बही को बेस करी के उत्तर केमते रे हम से जिन जो छी सो यू नो द पोएट डाउट्स इफ एनी मैन लिविंग हैंड्स आउट ए पाउंड आउट नोट विदाउट ए पेन एते बही को बेस करी ओके नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा व्हाट डज ए मैन फील सॉरी व्हेन डज ए मैन फील रियल ट्रेमर व्हेन डज ए मैन फील रियल ट्रेमर मनुष्य को एक्चुअल जंत्रणा केतबेले हुए व्हेन डज ए मैन फील रियल ट्रेमर ए जगह रे तार प्रश्न कोन हो बोले ए मैन फील बही पूरा प्रश्न को बेस करके केम दे लिखबा ए मैन फील रियल ट्रेमर व्हेन ही हैंड्स आउट ए 10 पाउंड नोट सिंपल ए मैन फील रियल ट्रेमर सॉरी ए मैन फील्स रियल ट्रेमर व्हेन ही हैंड्स आउट ए 10 पाउंड नोट सिंपल एंड इजी देखो सेतबेले अनुभव जेतबेले से 10 पाउंड नोट गोटे काहू बढ़ाई दिए थर्ड क्वेश्चन देखिबा व्हाट डू यू यू नो व्हाट डू वी ग्रोवेल बिफोर एंड व्हाई बिफोर कोन बोले व्हेन ही हैंड्स आउट ए पाउंड नोट वेरी गुड प्रलिप्ता बहुत बढ़िया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला व्हेन डज ए मैन फील सॉरी व्हाट डू वी ग्रोवेल बिफोर एंड व्हाई हमें कहा आगे नतमस्तक होइथौ एवं काहे व्हाट you know do we grovel before and why यार उत्तर कौन हम बही हिसाब रे जदी रखबा सिंपल we grovel before money yes money कान्हा प्रलिप्ता बहुत बढ़िया yes we grovel before money काहे की why टा अछि ना we grovel before money because money has a fearful cruel you know what fearful cruel power among men because money has a fearful cruel power among men that's why we grovel before money simple and easy last question I got a question देखिबा बरे question होची why do we quarrel why do because money has a power money has a fearful cruel power beta pralipta yeah money has a fearful cruel power so next question la why do we quarrel why do we quarrel हम कहीं की डरू exactly why do we quarrel तो एठी आसिला we quarrel हम डरू we quarrel because money makes us quarrel what
because money makes us spoil, it has got us down. बही हिसाब रे कहूची मु बही हिसाब रे निज हिसाब रे केमते लिखिबा पोएम को बेस करके केवल लिखिबा मु किछि जानि नाही मु केवल बही भितरु लिखि पारिबी बुझिला मोर इंग्लिश पिला मानकर किछि क्वेश्चन थिला जे सर मोर इंग्लिश हो नाही हैं तो जदि इंग्लिश हो नाही देन फॉलो दिस स्ट्रेटजी हाउ टू राइट अकॉर्डिंग टू द पोएम पोएम को देखि के लिखिबा एवं फॉलो मार्क भी पाइबा ओके नेक्स्ट मेसेज को जिबा so एठी गोटे आइला for mankind says with one voice how much is he worth has he no money then let him eat that and go cold let him eat that and go cold and if I have no money they will give me a little bit so I do not die I shall have to eat that I shall have to eat that and if I have no money and it is that I am frightened of and that fear can become a delirium it is fear of my money made fellow man ये जो रहिला एटा या ऊपर पोएम रो त मु डिटेल्स पाठ ऑलरेडी पढाई देछि त एठी पोएम को एनालिसिस करने प्रश्न उत्तर रो आलोचना तो प्रश्न प्रथम प्रश्न हो what is that we are so terrified of what is that we are so terrified of को जिनसटा को हमें डरू चपिले को जिनसटा को डरू what is that we are so terrified of को जिनसटा को हमें डरू छे बही हिसाब रे उत्तर लिखिबा केमति लिखिबा we are so terrified of one part of the question then our answer we are so terrified of the collective money madness of mankind kana wow very good money makes us spoil kalyani okay so what is the answer we are so terrified of the collective money madness of mankind आंसर होची द कलेक्टिव मनी बेडनेस ऑफ मैनकाइंड नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डज द मैनकाइंड से विथ वन वॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट डज द मैनकाइंड से विथ वन वॉइस समस्त मनुष्य एक स्टोरी रे कोन कहंती व्हाट डज द मैनकाइंड से विथ वन वॉइस आंसर कोन हो द मैनकाइंड प्रथमे क्वेश्चन रो जो पार्ट रहला द मैनकाइंड सेज विथ वन वॉइस कोन हो द mankind says with one voice how much is he worth how much is he worth has he no money then let him eat filthy things or you can write let him eat that let him go cold how much is he worth yes परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न होची परवर्ती प्रश्न हला you know what will people say if you have no money कान्हा कल्याणी बढ़िया परवर्ती प्रश्न हला बेले what will people say if you have no money लोक कोन कहिबे जब तुम पाखरे पैसा नाही ताहले लोक कोन कहिबे if you have no money पैसा नाही मो पाखरे लोक कोन कहिबे if you have no money people will say let him go cold eat that if you have no money people will say Pralipta kahila you will eat that let him eat that very good yes so if you have no money people will say let him eat that and go cold let him eat that go cold इष्टा खाइबा को दियो ताको मरिबा पे दियो ठंडा छटपटी की मरु किछि केयर नवर आवश्यकता है नै परवर्ती प्रश्न देखिबा what sort of fear sorry what is that the poet is afraid of what is that the poet is afraid of what is that the poet कवि कहा को डरी चंती को जिंस को डरी चंती what is that the poet is afraid of यार आंसर कौन हो बिले the poet is afraid of or the poet fears moneyless condition the poet is afraid of not having money yes or no the poet is afraid of not having money and you can say a beggarly state the poet is also afraid of a beggarly state like this question number 5 not having money yeah pralipta yes beta परवर्ती प्रश्न होची what sort of fear does the poet mention here ए जो स्टैंजा रहला ए स्टैंजा रे what sort of fear the poet mentioned को माने प्रकार रो भय विषय रे कवि कहिसंती को प्रकार रो भय को से कोन करचंती माने डिस्क्राइब करचंती ए स्टैंजा रे कोन सेटा the poet mentioned fear of money made fellow men the poet mentioned fear of money made fellow men
मनीष पैसा पछरे पागल मनीष मानक विषय कवि कहते डरुवा विषय कवि कहते मनी मेड फेलो मैन प्रलिप्ता यस बेटा कल्याणी कान्हा हेले आउ गोटे नेक्स्ट पैसेज को जीवा जदी नेक्स्ट पोएम देखिबा वी मस्ट हैव सम मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग दैट एंड दिस इज ऑल रॉन्ग bread should be free shelter should be free fire should be free to all and anybody all over the world we must regain our sanity about money before we start killing one another about it it's one thing or the other next आइला एता क्वेश्चन आइला why should we save money आमे किछि पैसा काहे की रखिबा why should we save money बिले ए प्रश्नर उत्तर कोन हो why should we save money पैसा आमे काहे की संचय करके रखिबा तो एठी आमे लिखि परिबा सिंपली बही को बेस करके we should save money to save us from eating that to fulfill our basic needs आमे we can write तो मु एठी बही को बेस करके लिखि देली save money काना yes so we should save money to save us from eating that प्रलिप्ता तोर उत्तर मु भूल कहने बट आमे जेतिक लिखि पारे मुठी माने पुअर स्टूडेंट जो माने अछंती माने जो माने लिखि पारिबे नाही से मान को बळिया गोटे लेवल रे क्लास ए क्लास रे माने निहाती जो माने इंग्लिश को भाबुचंती कष्टिया पाठ से मान को पई आंसर गुडा को माने एप्रोप्रिएट आंसर जोठी आमे पूरा फुल टू फुल मार्क पाइबा माने बही को बेस करके लिखि सो वी शुड सेव मनी वी शुड सेव मनी टू सेव अस फ्रॉम ईटिंग दैट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हिच थिंग्स शुड बी मेड फ्री which things should be made free को जिंस मालिया मिलवा कथा फ्री हेबा कथा बोली कुआ जाईची which things should be made free तो एठी यार उत्तर आमे जो आलोचना करिवा सिंपल लिखिबा bread shelter and fire bread shelter and fire should be free नहीं तीनटा जिंस bread shelter and fire तीनटा जिंस bread shelter and fire should be free okay परवर्ती प्रश्न को ब्रेड शेल्टर एंड फायर प्रलिप्ता ओके काना ब्रेड शेल्टर एंड फायर परवर्ती प्रश्न देखिबा व्हाई शुड दीस थिंग्स बी फ्री नेक्स्ट क्वेश्चन आइला व्हाई शुड दीस थिंग्स बी फ्री काहे की एई दिन जो माळिया मिलवा कथा नहीं व्हाई शुड दीस थिंग्स बी फ्री ए जिंस सब काहे की माळिया मिलवा कथा बिले this thing should be free because these are the basic needs as Pralipta has said so this should be free because these are the basic requirements of life and to avoid them we need money एटा बेसिक जिंस आ याकू आमे भी किनिबा पई हमको पैसा दरकार होची तेनु बेसिक जिंस कम से कम फ्री हवा दरकार परवर्ती प्रश्न देखिबा बेले परवर्ती प्रश्न होची हाउ कैन वी रिगेन आवर सैनिटी आमे हमर जो मानविकता केमती फेरी पाइबा हाउ कैन वी रिगेन आवर सैनिटी परवर्ती प्रश्न गुडी को नोट करके आंसर भी जदी पारुचे वीडियोटा को पॉज करके लिखि परिबा परवर्ती समय तो एठी कहला बेले हाउ कैन वी रिगेन आवर सैनिटी आमे हमर मानविकता केमती फेरी पाइबा so we must regain our sanity about money by making everything free we can regain our sanity बुझेला or by making the basic needs free we can regain our sanity by making these things free to avoid money madness by avoiding or by making these things free we can regain our sanity परवर्ती जिंस होची परवर्ती जिंस it is one thing or the other explain टिके लंबा आंसर अछि it is one thing or the other गोटे जिंस हो नले आ गोटे जिंस हो एटी जो कुआला it is one thing or the other means to make everything free is an alternative to money madness बुझला so making everything free is an alternative to money madness alternate होची मनुष्य पागल पैसा पैसा पागल हबो नै कोन करा गले जदी सब जिंस आमे ए जो बेसिक नीड्स गुडा को फ्री कर दबा ओके एंड इफ एवरीथिंग इज फ्री देयर इज नो नेसेसिटी फॉर मनी एंड इफ दिस बेसिक थिंग्स आर फ्री देन देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ मनी जदी ए सब जिंस फ्री रे मिलि जीवो ताहेले को हबो हमको आउ माने स्ट्रगल करबा पे पड़िबो नै मो पैसा पत्र हमें नाइबा नै तो ये थिला पिले
किछिटा बही भीतर प्रश्न वर्तमान टिके थिंक इट आउट रो प्रश्न उत्तर डिस्कशन करिवा थिंक इट आउट रो ना एतिक रे ही जीवो ना थिंक इट आउट भी देखिवा एटी प्रथम प्रश्न अछि आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मेड फॉर मनी व्हिच लाइन इंप्लाइज दिस पैसा पछरे पड़िबा ना हां तो एटी आइला आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मेड फॉर मनी व्हिच लाइन इंप्लाइज दिस तो ये कहगला जे प्रत्येक पृथ्वी पृष्ठर प्रत्येक व्यक्ति पैसा पत्र पागल कि को लाइन रु जना पड़ू सो ऑल द पीपल ये प्रथम येस नो क्वेश्चन जेहेतु आई कौन करवा पे आम प्रथम येस तो लिखा जदि नो होता नो लिखि था कमा देके स्टार्ट करवा सो येस ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर मेड फॉर मनी मनी इज आवर मेडनेस आवर वास्ट कले ओके प्रलिप्त तो ये कहला ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर मेड फॉर मनी सिंपल yes all the people of the world are made for money it becomes a type of addiction we get the idea about this line and first stanza and we get this idea in the first stanza of the point pratham stanza money is our madness our worst collective madness like it so we get this idea in the first stanza of the point money is our madness our worst collective kana bahut badhiya परवर्ती प्रश्न देखिबा are all the people equally made for money or degree of madness varies from person to person पृथ्वीर समस्त व्यक्ति समान परिमाण रे पैसा पाई पागल कि किंबा ना एरा समस्त अलग अलग ही था ये जो प्रश्न आसिला तो ये यार उत्तर मध्य पिले आम यस ही दबा यस ऑल द पीपल आर इक्वली मेड फॉर मनी कौन यस ऑल द पीपल आर इक्वली मेड फॉर मनी द वर्ड्स आर मेडनेस एंड आर वास्ट कलेक्टिव मेडनेस प्रूव दिस एंड ताकू प्रमाण करबा पे हम दुईटा जिंस देई परिबा सेटा होची money is our madness and our vast collective madness बुझेला our madness and our collective madness ये जो लिखा हला if the multitude is mad प्रत्येक व्यक्ति एठी लिखा हला if the multitude is mad जेतु कवितार लिखा छै प्रलिप्त हम कहूनी it varies from person to person सेटा सत्य न but according to the poem कवितार कोन लिखा छै कवितार लिखा छै जे you know multitude is mad माने प्रत्येक व्यक्ति पागल बोली जेहेतु कवितार लिखाई आमको आंसर टाकू येस करके दबा पड़ो बुझीगला जेहेतु कविता आम कविता अनुसार आंसर दबा तेणु कविता अनुजाई यार उत्तर यस क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज ए पर्सन फील व्हेन he parts with a pound of money but the individual carries his own grain of insanity so how does a person feel when he parts with a pound of money जते बड़े गोटे पाउंड पैसा तार हजि जाए से केमती फील करे तार अनुभव कौन हुए nowadays people become self control so having narrow thinking and when a person parts a pound of money he gets a sharp pain he feels a pang he feels a pang simple so when he parts with a pound of money he feels pang एतकी लगले और आंसर करेक्ट होछि परवर्ती प्रश्न को देखिए जीवा how does a person what kind of feeling does money create in us when a person parts a pound of money feels some pang very good बढ़िया so what kind of feeling does money create to us next question नहीं ना question थिला how does a person feel when he hands out a 10 pound note जेतबले से 10 pound note गोटे बढ़ाई दिए he feels tremor very good he feels a pang and tremor very good so uttara haba whenever a person hands out a 10 pound note he is seen with a genuine fear he feels a real tremor nahi a genuine fear da bhitar dekha jaye he feels a real tremor परवर्ती प्रश्न देखिबा is afraid of it परवर्ती प्रश्न होची what kind of feeling does money create in us ए प्रश्न रो उत्तर दे से पूर्व प्रश्न थिला how does a person feel when he hands out a 10 pound note वर्तमान में देखिए आ गोटे प्रश्न सेटा होची व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज मनी क्रिएट इन अस आम भितरे पैसाटा की भलिया गोटे फीलिंग क्रिएट करे सो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव फीलिंग मनी मेक्स अस क्वाइट प्रलिता यू आर क्वाइट राइट बट आमे जदी आउटिके जीवा डीपली आउ चिंता करबा इट क्रिएट्स अ नेगेटिव फीलिंग इट मेक्स अस एंग्जियस एंड सफर it makes us anxious and suffer we quail and grovel according to the text we quail and grovel परवर्ती प्रश्न are we really afraid of money or money made man strange terror तो कौन परवर्ती प्रश्न 6 नंबर प्रश्न बही ने जहाँ अच्छी
are we really afraid of money or money made men? Are we really afraid of money or money made men? Phil Stramer, money makes us spoil and stranger. Okay. So, are we really afraid of money or money made man? I'm a kakuduru, paisa kuduru, na money made fellow man. We are really afraid of money made fellow man. Yes. We are not afraid of money, we are really afraid of money made fellow man. Paravati prashna dekhiba. What do people say about a man's worth? What do people say about a man's worth? Gote manishara value babadre lok mane kon kuhante bile. The people say about a man's worth that how much money he possesses. How much money he possesses. Has he no money? Then let him go cold, eat dirt. Yes or no? ଯଦି ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ମରୁ ବିଷ୍ଟା ଖାଉ ମଇଳା ଖାଉ ଯାହା ବି ଖାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ ୱର୍ଥ ୟେସ୍ ଖାନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ତମର how many times is that repeated in the poem? How many let me see the book. So how many times is that repeated in the poem? What does the poet mean by that? It that शब्दटा केते थर रिपीट हेची एवं कोन कहला what do you mean by that? It is जो लिखा है। So the word that is repeated here 5 times. 5 times it is repeated, and your that means exactly is the great misery faced by the poor people. Great misery माने तो घृण्य अवस्था घृण्य कंडीशन विचार जो कह जाइछि से ताको डाट बोल के वर्णना करा जाइछि एठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डू मनी मेड men treat a man without money? How do money made men treat a man without money? तो पैसा पथर पागल लोक माने पैसा नथिबा लोक को की भलिया ट्रीट करनते की भलिया व्यवहार देई थामते पिले हैं सिंपल आमे जानी थिबा यार उत्तर तो बैडली ही हबो। सो मनी मेड men treat very badly to the men without money. They all treat them and allow them to suffer. They all treat them and allow them to suffer with contempt. Okay. परवर्ती प्रश्न देखा क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर प्रश्न बैडली या प्रलिप्ता। सो व्हाट डज अ मैन विदाउट मनी फियर पॉवर्टी और डिजनर बाय ईटिंग डॉट? एठी जो प्रश्न रहिला व्हाट डज अ मैन विदाउट मनी फियर जने पैसा नथिबा लोक को दे से लेट देम इट डॉट करना। ओके विदाउट रेस्पेक्ट प्रलिप्ता बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट डज अ मैन विदाउट मनी फियर गोटे पैसा नथिबा लोक कोन को जिंस को भय करे। ओके पॉवर्टी और डिजनर बाय ईटिंग दैट डिजनर बाय ईटिंग दैट प्रलिप्ता कहला। ओके से जो माने नीच घृण्य बोली निजको जो काउंट करा जाए से जिंसटा को जो सम्मान मिले नाही से जिंसटा को बेसी भय करे नाही पिले ताले उत्तर केमति लिखिबा पिले ए मैन विदाउट मनी फील्स डिजनर ए मैन विदाउट मनी फील्स डिजनर और डिसरेस्पेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा पिले आमे थिंक इट आउट रो प्रश्न वर्तमान आलोचना करूचे पैसेज ऑलरेडी पैसेज रो इनसाइड क्वेश्चन ऑलरेडी आलोचना कर सालरेडी। व्हाई डज द पोएट से वी मस्ट हैव सम मनी? कवि काहे की कहचंती वी मस्ट हैव सम मनी हम पाखरे किछि ना किछि पैसा रहिवार दरकार अछि ए कथा कवि काहे की कहचंती व्हाई डज द पोएट से वी मस्ट हैव सम मनी जे हम पाखरे किछि ना किछि पैसा रहिवार आवश्यकता अछि। So, according to the poet, कविंको अनुसारे, according to the poet, the means of bread, shelter, and basic needs of life. The means of bread, shelter, and fire to fulfill our basic needs of life. Yeah, simple. To fulfill the basic needs of life. Nahin? So we need money to get all these basic things. We need money to get these basic things. परवर्ती जगह को जीवा पिले डू यू थिंक ब्रेड शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री एंड व्हाई? डू यू थिंक ब्रेड शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री? इफ यस व्हाई? प्रथम तो हमें यस कहबा यस 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 सो आई थिंक ब्रेड शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री बिकॉज दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल विदाउट these things they cannot survive कारण यह बिना मनुष्य बंची पारिबो नाही तो ए जिंस सब फ्री रे मिलिबा कथा पिले नहीं
लास्ट क्वेश्चन मु गोटे आलोचना करी क्लास टाक सम अप करवा व्हाट डज इट मीन टू रिगेन आवर सैनिटी बिकॉज दीज आर द बेसिक नीड्स प्रलिप्त कहला व्हाट डज इट मीन टू रिगेन आवर सैनिटी शब्द ये जो व्यवहार कराई यार अर्थ कौन बेसिक नीड्स ऑफ पीपल का ना ओके सो व्हाट डज इट मीन रिगेन आवर सैनिटी मीन्स टू गिव अप क्रेज ऑफ मनी क्रेज फॉर मनी to give up craze for money regain our sanity means to give up the craze for money पैसा पाई पागल हबार जो आम भितर क्वालिटी अच्छी आम से जिनटा को छाड़वा ये हूँ रिगेन आवर सैनिटी रो अक्षरिक अर्थ बा मूल अर्थ पिले तो ये थिला क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर माने आम जी प्रश्न आलोचना कले ये प्रश्न यदि आम नोट डाउन करके रखा पिले ए भितर काली करवाटी काली परीक्षा करवा काली जिते बड़े भी परीक्षा हम मुझे तुमको अध घंटा सॉरी 45 मिनट आगु इनफॉर्म करदेवी तुम जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी और टेलीग्राम ग्रुप रे कि आज परीक्षा हम बोलिकी जिते बड़े फ्री हेबी मु काली यस बारटा गोटे पर आई थिंक मोर आउ क्लास नाई गोटे पर तो काली देखुची ट्राई करूँ एग्जाम करने ओके सी यू देयर स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश जय जगन्नाथ।